just froze. Saif and Alan, I will just join after a minute, okay? My laptop froze, I cannot click anything. Okay, I hope everything goes fine now. Let me see. Yeah. Okay. So I hope all of you can see the screen. And the question is asking to indicate which one of the following is not correct. Which one of the following is not correct? In which one of the following arrangement, the given sequence is not strictly according to the properties indicated against it. Now, first we have the increasing oxidizing order. Now, whatever is same, whenever you have comparison, कुछ भी same हो उसको नहीं देखना है. Whatever what you have to see, what is different here. So there is no matter. Here we have O2. तो O2 की वजह से कुछ नहीं होने वाला है. Let us look at the oxidation state. So you have here +4, +4, +4, and +4. So carbon, silicon, then you are going to have tin and lead. All of these are having +4 oxidation state. Okay? Now, if all of these +4 oxidation state, they are acting as an oxidizing, they are acting as an oxidizing agent. That means they themselves will get reduced. So they will go from +4 to +2. Is this clear till here? Yes or no? Please tell me, all of you. Yeah, the clear is sabko? All of these are of +4 state, and yes, if sir, they are acting as an oxidizing agent, they themselves will get reduced, and they will go from +4 to +2. Now, which one of the following is going to go easily from +4 to +2? From inert pair effect, what we can say, down the group, lower oxidation state is more stable. And that is why this order is correct. PB +4 can easily convert itself to PB +2. And that is why this is the correct increasing order for oxidation potential or increasing oxidizing order. Is this clear? Yes or no? Please tell me. Yes. Yes, sir. This is correct. Your option correct hai. That means this is not the right option.
statement correct hai. Then next we have HF, HCl, HBr and HI. These are in increasing acidic strength again. Now acidic strength, it depends on the bond between hydrogen and anything that is attached to it. If this bond is strong, then it will be what? It will be not a good acid, it will be a bad acid. So for a good acid, this bond should be what? It should be weak. And how it can be weak? As you can see, hydrogen is same here. What is the difference? Fluorine, chlorine, bromine, iodine, bromine and iodine. The difference is in the orbital. So fluorine is second period, so it is using 2p. Chlorine is using 3p. Bromine is using 4p, and iodine is using 5p. Obviously, hydrogen is very small, S subshell, and 5p will be very large, and that is why the extent of overlapping will be very low. And that is why HI is going to be the best acid here. And hence we can say that this is also the correct order. This is also the correct order. Now, similarly, we have increasing pKa value. That means decreasing. This is the order of what? Decreasing. Acidic strength. Now we have just seen that down the group, if I have hydrogen and the non-metal, then down the group, what happens? The acidic strength increases. Now this order that they are seeing, it is not the correct order. This is not the correct order. So this is going to be the wrong statement and the correct option. Here also you can see the hydrides of the non-metal. They are in increasing acidic strength as we go down the group. Nana, Patekar, Aishwarya, Sab, Bima. Then we have Bismuth. Okay. So one thing you understood, if you have hydrides, then what happened? Acidic strength, it increases down the group. Please write this down. Let me know once you're done. Okay, Aksa, Mamuna, and Farhat, did all of you get a PDF from Learnivio? Yes, P-block elements? Yes or no? Yes, sir. Okay. Okay. All of you done? Yes or no? Please tell me. सबने लिख लिया? Okay, let me know if you have not written. Actually, try to do this one. ये अगर आपका सही हो गया तब भी you will get the answer 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. C में you will have chances. D हाँ चलिए ठीक है. If you can correctly identify what is the formula for borax, you will get the all marks, because 1 2 3 4 5 3 4 borax अगर आपने सही कर लिया, then you will get the complete marks. No one. अच्छा, ऑर्थोबोरिक एसिड कौन सा है बता दीजिए कम से कम. ऑर्थोबोरिक एसिड, which one is orthoboric acid? Which one is अच्छा orthoboric acid? Orthoboric acid will be H3BO3 ना, H3BO3. ठीक है, चलिए खैर. The formula for borax is Na2B4O7 10H2O. ठीक है. Even though this is just the molecular formula, थोड़ा सा अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, then it will have Na2 will be outside, and then there will be a complex of B4O5. There are some OH here. How many OH will be there? 8H2 अगर होगा वहां पे, then it will be 4 OH.
dot 8H2O. ठीक है. So please remember, whenever you see borax, उसमें आपके दो मिल सकते हैं. You will either get this formula or you can get the 8H2O formula also. Okay. So please keep that in mind. So borax is 4. So the correct option is going to be B. Bagi kernite is Na2BO4, O7, and then you have 4H2O. Orthoboric acid is S3BO3, and then you have borax beads which are NaBO2. ये दोनों जो है ना काफी कॉमन है. I mean ये याद रहता है लोगों को. ठीक है, तो इन दोनों को कम से कम याद रखिए. S3BO3 is what? Orthoboric acid, and borax bead is NaBO whole twice. Which one of the following reaction is a part of large-scale industrial preparation of nitric acid? What do you think is the cheapest? देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, which is very easily available. It is one of the like आसानी से तो खैर नहीं मिलेगा आपको, but still. Yes, SAF correct. SAF, how did you identify? What did you identify? Oxygen. Oxygen, and that is also from air, है ना? So whenever you have industrial preparation, हम ये बता रहे हैं आपको, like right now you don't know anything, है ना? So I'm just telling you how to attempt these type of questions. Whenever you have industrial preparation, तो वहाँ पे देखिए which of the following has the cheapest options. And also what it is saying is a part of. जैसे इन्होंने बोल दिया ना is a part of, that means उसमें से जरूरी नहीं है कि क्या बने, नाइट्रिक एसिड ही बने, right? So ये से सर नाइट्रिक एसिड तो इसमें बन ही नहीं रहा है, कोई ऑप्शंस को लगा के नहीं आएगा. But that is a trick here. It is asking, it is a part of the large scale industrial preparation. It's not that एक ही step में सारा reaction हो जाएगा and you will get the nitric acid. It is a sequence of steps. Okay. Now let me tell you what happens later on. Once you have NO gas, it reacts again with NO. It reacts again with oxygen, and after that it forms NO2. Okay. Now, once you have got NO2, what is the oxidation state of nitrogen here? It is +4, है ना? पानी में डालिए, क्या मिल जाएगा आपको? HNO3. ठीक है? What you are going to get? You are going to get here HNO3, nitric acid. ठीक है? So please write this option, the correct option. लिख लीजिए आप इस पूरे सीक्वेंस को लिख लीजिए. HNO3 plus you also get NO. NO को लिखना है, NO को भी लिख लीजिए. This is from preparation of nitric acid. Okay, moving on. Sir, 1 minute. Okay. Yes, sir, done. Is anyone still writing? Please let me know. Done, everyone. Chalo. Now, this is completely factual, है ना? ये आपको अगर याद रहा तो याद रहा, नहीं याद हो तो फिर आपको will not get the answer. So in this case, the correct option is C, B2O3. ठीक है? So please write Na2 B4O7. When you heat it, it is going to give you B2O3 and NaBO2. The 2 NaBO2 मिल जाएगा बेसिकली आपको. 2.24 गया. ठीक है.
Moving on. Yes. ये थोड़ा सा आप लोग कर सकते हैं. Try this one. Here you have options. Electron precise यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे exactly. Electron deficient यानी कि it will be having less than 8 electron. ठीक है, it will be having less than 8 electron. And if it is electron rich, इसका क्या मतलब हुआ? If it is electron rich, it will not be having कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं आ जाएगा, right? It is going to be having lone pair electron, something like that. Okay, so electron rich का मतलब it will be having lone pair electrons. Ionic का मतलब तो आप लोग को पता है. 1 2 3 4. अरे ए ऑप्शन ए आप करेक्टली चूज कर लीजिए, MgH2 वाला. करेक्टली चूज द MgH2 ऑप्शन, है ना. 1 2 3 4 5 कोई एक ही करेक्ट होगा यहाँ पे. इट्स वेरी इजी. You know the A1, it is fine. मैग्नीशियम हाइड्राइड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच या आयनिक? साफ करेक्ट, वेरी गुड. See here guys, जर्मेनियम हो गया, you have boron, you have fluorine, all of these are what? All of these are p block elements, है ना. तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीशियम ही ऐसा जो कि s block element में है. That is why it is having, it will be having the most metallic character and it will be what? Ionic in nature. ठीक है, तो मैग्नीशियम will have what? +2 चार्ज, है ना. और हाइड्रोजन के पास नेगेटिव एंड हाइड्रोजन के पास नेगेटिव होगा. ठीक है, सो ए का डी, सॉरी ए का 4 होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी A4B1. This is electron precise. Germanium is having what? How many electrons? It is having 4 hydrogens. That means 4 bonds and 8 electrons. B2H6 की अगर हम बात करें तो obviously it is going to be what? It is going to be electron deficient. Why it is electron deficient? Because boron के पास कितने hydrogens हैं? It has, each boron has 3 hydrogens. That means 6 electrons. HF is electron rich. Why? Because hydrogen and fluorine. Fluorine has lone pair electrons. ठीक है, और बाकी किसी में lone pair electron यहाँ पे नहीं है. Okay, understand these definitions also. Electron precise का मतलब हो गया equal to 8 electron. Deficient का मतलब हो गया less than 8 electron. And sorry, less than 8 electron. And electron rich का मतलब हो गया more than 8 electron. Ionic का मतलब हो गया there is some lone pair. चलिए, moving on. Tell me which of the following statement is not correct about diborane. Diborane is B2H6. Last class में हम लोगों ने पढ़ा था B2H6 के बारे में. Draw the structure of B2H6 and you will understand which one of the following is incorrect, is not correct.
अरे गाइस ऐसे कैसे चलेगा? Yesterday we did ना B2H6 हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, एक बोरॉन बीच में और यहाँ पे एक बोरॉन बीच में. So this boron has these three hydrogens. इस बोरॉन के पास ये तीनों हाइड्रोजन है, right? And then it has a bond between these two hydrogens also. ठीक है. First of all, three centered two electron तो है ही बिल्कुल, right? We have seen this in the last class. इन दोनों के पास ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के पास ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन, बट दीज थ्री आर इन वन बॉन्ड. तो ये सारा क्या है? दिस इज बनाना बॉन्ड, राइट? दिस बनाना बॉन्ड. सो देयर आर थ्री सेंटर्स एंड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स. हाँ, दो है ना इस तरह के, एक तो ये वाला बनाना बॉन्ड हो गया और एक ये वाला बनाना बॉन्ड हो गया. ठीक है, इस तरह कितने हमारे पास? देयर आर टू थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3C 2E. द फोर टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर, अच्छा देयर आर होगा, ये आर इधर आ गया. देयर आर फोर टर्मिनल BH बॉन्ड्स, ठीक है, चार टर्मिनल वाले हैं, एंड टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, है ना. एंड देयर आर BH बॉन्ड्स एंड टू सेंटर वन टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स. हाँ, ये दोनों सेंटर के हैं और इनमें कितना इलेक्ट्रॉन से? देयर आर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स. थोड़ा सा इसमें, दिस इज नॉट वेरी गुड राइटिंग. The four terminal hydrogen atoms and the two boron atoms lie on the same plane. That is also true, है ना. ये ऊपर होता है और ये नीचे होता है ना. All of these they are lying in the same plane. Why? Because यहाँ पे अभी जो इसकी hybridization है, these hydrogens and this boron ये एक ही जगह है, and then this hydrogen is on the another plane, and ये hydrogen आपके पास अलग plane में है. Then you have the last option, both boron atoms are sp2 hybridized. Now this cannot be correct now. जब इसके पास चार bond है, then it will be what? sp3 hybridized. This will also be sp3 hybridized. ठीक है. So आपको स्ट्रक्चर बनाते के साथ ही पता लग जाएगा that it is having four bonds. That is why it is going to be sp3 hybridized, and this D option is not the correct statement. That is why it is the right option. Draw this quickly. Let me know once you're done. Okay, moving on. Second. Shall we try this one? The boiling point of the following hydrides of group 16 element increases in the order H2O, H2H, H2, selenium, and then you have tellurium. The boiling point of these hydrides increases with the increase in their molar mass. In the light of above statement, choose the most appropriate answer from the given options. बताएं जरा. Can you tell me one thing? H2O normal conditions में what is the state, liquid, solid या gas? किस फॉर्म में होता है लिक्विड, सॉलिड और गैस? टेल मी गाइस. हाय हाय. H2O कौन से फेज में होता है इन नॉर्मल कंडीशंस? In liquid. हाँ, ये इतना लिक्विड. अच्छा. एंड व्हाट अबाउट H2S? Gas. गैस. तो बताइए
which will have higher boiling point. गैस का ज्यादा boiling point होगा या लिक्विड का ज्यादा boil? तो गैस बन चुका है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस में इट इज ऑलरेडी गैस, है ना। और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में भी गैस बनता है, 100 डिग्री सेल्सियस में गैस बनता है। सो ऑब्वियसली विच इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट? टेल मी, H2S या वाटर? H2O. अरे भाई, वाटर का हायर बॉइलिंग पॉइंट ना 25 डिग्री में ऑलरेडी कोई गैस है, और इसे 100 डिग्री में भी वाटर है, राइट। ऐसा नहीं कि अचानक से खत्म हो जाता है ना, सारा गैस बन नहीं जाता 100 डिग्री में, इट स्लोली स्टार्ट्स बॉइलिंग आउट, धीरे धीरे बॉइल करना चालू होता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली वाटर इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट राइट, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। व्हाई? वाटर इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट, आप लोगों को पता है इट इज लिक्विड एंड दैट H2S इज व्हाट इट इज गैस। H2S आप लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस में यूज किया होगा, राइट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, the boiling point of these hydride increases with increase in their molar mass, obviously no, because H2O से ज्यादा molar mass किसका है? H2S का है, but again H2O is having higher, H2S is having higher boiling point. Now why does H2O has higher boiling point? It is because of hydrogen bonding, ठीक है। अदरवाइज अगर H2O नहीं होता और यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम बात करते, then this statement is also true and statement 2 is also true, but only because of the presence of H2O. Statement 1 तो बिल्कुल सही नहीं है, and statement 2 is also not right. So both statement 1 and statement 2 are incorrect. All of you understood this? Yes or no? Please tell me. Aksa, Farhat, Maimuna, Saif, and Alan. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है, इस तरह से अप्रोच कीजिएगा। सी आई नो दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स सवाल आते से आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, बट अगेन आई एम गिविंग यू हिंट्स कि आपको सोचना किस तरह से है अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा, ठीक है। ट्राई टू लुक एट थिंग्स जिसके बारे में आपको कुछ भी पता हो, थोड़ा सा भी पता हो ना, आप उसके बारे में सोचिए और वहां से आप लोग स्टार्ट कीजिए चेन ऑफ थॉट्स एंड देन यू विल गेट द आंसर। बट ऑब्वियसली ऐसा सीधा एग्जाम में जाके नहीं करने का है, प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से सवालों की, ठीक है ना। व्हेन यू गेट एनी क्वेश्चन, आप जैसे फॉर एग्जांपल यू आर प्रैक्टिसिंग, आपने 10 सवाल सोचा कि 10 सवाल करने की हम करेंगे बैठ के, या फिर 10 सवाल तो नहीं, आई थिंक एटलीस्ट यू शुड स्टडी फॉर हाफ एन आवर। हाफ एन आवर में 20 क्वेश्चंस एटलीस्ट आपके हो जाने चाहिए, राइट। सो स्टार्टिंग यू हैव मेड अ टाइमर, 20 सवाल लगाने हैं। अब 20 सवाल में कोई एक सवाल ऐसा आ गया जिस बारे में आपको कोई आइडिया नहीं, बट इनसाइड दैट क्वेश्चन देयर विल बी सम, कुछ पार्ट ऐसा होगा जिसके बारे में आपको कुछ पता होगा। सो ट्राई टू थिंक ऑन दोस टर्म्स, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन। Acid strength increases in the given order: HF, then HCl, then HBr, and then HI. As the size of element fluorine, chlorine, bromine increases around the group, the bond strength of HF, HCl, HBr, and HI decreases, so the acid strength increases. चलिए ये बता दीजिए, अभी तो हमने बिल्कुल एक्सप्लेन किया था इसको, है ना। What will be the right answer? Yes, Saf, correct, very good. Waiting for others, आना चाहिए आंसर, अभी तो आना चाहिए ना। We have just explained this in the first question. Yes, Maimuna, correct, very good. Yes, very good. So as we have already discussed that as we go down the group, what happens? Yes, Farhat, correct. As we go down the group, then the size of non-metal increases
And the bond between hydrogen and the non-metal is not very effective because of low extent of overlapping, and hydrogen can easily be removed. If hydrogen can easily be removed, that means it is a good acid, better acid, strong acid. That means B is the correct statement. चलिए बताइए जरा. Okay. So let me see, Saf. Noble gases are named because of their inertness towards reactivity. Identify an incorrect statement about them. Noble gases have very large positive value of electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy, that means if I'm going to give them electron, yeah, then it will require a high amount of energy. That is correct. Noble gases are sparing soluble in water. That is also true. Noble gases have very high. No, this is not true. The correct option will be argon वगैरह सारे तो gas होते हैं ना, तो obviously noble gases हैं तो they will how they can have high melting and boiling point. तो gas का कैसे high melting और boiling point हो सकता है, right? So C is the wrong statement and the correct option. I write this down and let's move on to the next question. चलिए ये बताइए NEET students. Which of the following is not correct about carbon monoxide? चलिए most of you would not know. ठीक है, बिल्कुल factual सवाल है ना? Syllabus मतलब it is in the syllabus. कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोग पढ़ सकते हैं. हाँ, B is the correct option. ठीक है. The carboxyhemoglobin, the hemoglobin that is bound to carbon monoxide, is less stable when the hemoglobin is bound to oxygen. ठीक. And that is why यही reason है जिसकी वजह से carbon monoxide, if it is there inside your body, then it reduces the oxygen carrying capability of the blood because it forms carboxyhemoglobin. ठीक है, तो हेमोग्लोबिन तो उतना ही का उतना ही है. हेमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को पहुंचाना. अब ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा के वो क्या पहुंचा रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचा रहा है. दैट इज व्हाई इट डिक्रीजेस द ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ द ब्लड. ठीक है, चलिए. ऑल्दो इट्स टेंडेंसी टू गेट अटैच्ड इज बिट लेस देन ऑक्सीजन, बट स्टिल कुछ तो है. ट्राई दिस वन. This is actually like चलिए
सवाल लिख लीजिए फिर हम आपको बताते हैं एक्चुअली व्हाट इज दिस क्वेश्चन अबाउट. Or it is related to P block elements. See, first of all, you have urea. What is urea? C double bond O, NH2, NH2. ठीक है, तो यूरिया रिएक्ट्स विथ वाटर. पानी के साथ इसको आप रिएक्ट कराइए, you will get NH4 whole twice and NH4 will be having a positive charge. तो बचा आपके पास CO3 2 negative, CO3 2 negative है ना. Now, which will decompose to form A, which will decompose to form B. अब NH4 and NH4 whole twice and CO3, when it is going to decompose, it is going to form a few things. What are the few things that it is going to form? It is going to form NH3 plus it forms water. Now with remaining of the carbon, अब कितना कार्बन बचा है उसके हिसाब से one CO2. ठीक है, I think it will form 2 moles of ammonia. ठीक है, but again that is not very much required कि what balanced chemical reaction नहीं चाहिए, but it forms ammonia. Now it is saying when B is passed through Cu2 positive, जब अमोनिया को आप copper 2 positive के थ्रू पास कराइएगा copper 2 positive, then ammonia will get attached to copper 2 positive and it will form a complex copper, and then you will have NH3 whole 4 2 positive because ammonia is still neutral. अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है, and this is going to be a deep blue color solution. So B is the correct option. Basically ये जानना चाह रहे थे at see this part B when passed through Cu2 plus a deep blue color solution is formed. So they were assuming कि अगर आपको B पता चल जाएगा तो whatever is B वो अटैच हो जाएगा copper 2 plus से, इतना आप लोग कर पाइएगा. ठीक है, so basically वो जानना चाहते थे कि B क्या फॉर्म हो रहा है. So B is NH3. Please write this down. So deploy this. एक दो कम से कम बताइए. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड कौन सा है? C. सॉरी, सी ना. हाँ. So which of the following can be correct options? B, C or D? अच्छा. Yes. Memuna, that is right. Very good. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल सी का क्या है? सी का आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए. दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड. तो ये हो जाएगा 2 H2O2.
If you look at the structure of H2O2, H है, then oxygen, then again oxygen, है ना, and then you have hydrogen. ठीक है. Now both of these oxygen are in the plane. इसमें से एक हाइड्रोजन जो होता है that is outside the plane, and then one of the hydrogen is inside the plane. So obviously it is what? It is a non-planar structure. It is what? It is a non-planar structure. ठीक है. तो D का क्या हो जाएगा? 4. अब कौन सा ऑप्शन बचा? You have either A or sorry, you have either C or D. Now temporary hardness of water का synthesis gas के साथ कोई relationship हो ही नहीं सकता है, right? So temporary water can only be one. Magnesium Mg2+ और calcium 2+ ही temporary hardness में use होते हैं, right? So the correct option is going to be what? B का 1 हो गया. Yeah, D is the correct option. Will you try this one? Guys, any luck? Yes, Saf and Alan correct. C is the correct option. अच्छा, ये तो सही है लेकिन ना, CO2 को तो यूज किया जाता है, राइट? CO2 को तो यूज किया जा सकता है, बट द थिंग दैट दे हैव गिवन इज ये पार्ट. इन्होंने जो गैस लिख दिया ना, दिस इज नॉट राइट. किसको यूज करते हैं? ड्राई आइस यूज करते हैं. yes or no, please tell me. है ना? What is the formula of dry ice? What is dry ice, guys? Dry ice is nothing. Dry ice is CO2 only, but it is a solid form of CO2. ठीक है, ध्यान रखिएगा. तो सिर्फ इस G के वजह से A is not right. ठीक है, otherwise A would also have been right. अच्छा, जहां तक बात है आपके पास, the structure of C60, it contains 12 6 carbon rings and 25 25 and 25 carbon rings, है ना? यानी कि उसमें इस तरह के रिंग्स कितने होते हैं? They are saying that this type of ring is 12 and 5 कार्बन वाले रिंग कितने हैं यहाँ पे? They are saying they have 20. ठीक है, बट दे आर अ बिट रॉन्ग. यहाँ पे उन्होंने उल्टा कर दिया है इसको. 6 मेंबर वाले 20 होते हैं, ठीक है, और 5 मेंबर वाले
12 होते हैं, ठीक है, फ्लोरीन में when you have C60, and बाकी C and D these are correct. Now these are a wrong statement. चलिए moving on. Tell me which of the following oxy acid of sulfur has OO linkage? कल की क्लास में कराया था। Yes, very good, correct. सही है सर, वेरी गुड। अरे कल तो कराया था ना, 2-3 तरीके से कराया था आपको। पर ऑक्सो जहां पे भी होगा यू विल हैव ओओ लिंकेज, ठीक है। व्हेनेवर यू हैव पर ऑक्सो तब वहां पे क्या होगा, ओओ लिंकेज होगा। इज दिस क्लियर? यस और नो, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू। Yes, sir. इज द करेक्ट ऑप्शन। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा, SO-S बॉन्ड होगा, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन, ये बताइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ पे पहले वाले स्टेटमेंट में ये पूछ रहे हैं जर्मेनियम का +4 ज्यादा स्टेबल है या +2 ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। देन दे आर आस्किंग when you have tin and 4 sorry F4, then in that case it is ionic nature में या फिर it is covalent है nature में। then they are saying is Pb F4, then now Pb is again +4, it is covalent in nature, and then ये पूछ रहे SiCl4 is easily hydrolyzed। इन सब के बारे में बताइए। See here guys, if I look at the first statement, and then in that case we can see that germanium में +4 and +2 है ना। तो if I look at the carbon family, you have Cassie, Geet, Sunao, Prabhu, right? So both of these are going to show inert pair effect, लेकिन germanium में उतना inert pair effect नहीं होगा। That is why I can say that +4 is more stable or approximately as stable as +2 only, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, +4 is yes, that is more stable. Then tin F4 it is again ionic in nature, why? Because अब ये metal आ चुका है ना। उसी तरह से PbF4 भी क्या है, it is also what, PbF4 is what, it is metal। यहाँ पे lead is also a metal and F4 negative will be in what, in its ionic state, ठीक है। So C is the correct option and it is an incorrect statement. SiCl4 is easily hydrolyzed. Why it is easily hydrolyzed? Because silicon has weakened d orbitals, ठीक है। हाइड्रोलिसिस के केस में क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए। Try this. Which of the following species is not stable?
See, all of these are again कैसी, गीत, सुनाओ, प्रभु. ठीक है. अब SN में क्या लगा हुआ हो, आपके पास OH लगा हुआ हो. ठीक है, और वो भी कितना 6 लगा हुआ हो. ठीक है, इज दिस पॉसिबल और नॉट, ये सोचिएगा जरा. ठीक है. Then you have silicon. Silicon में you have attached chlorine. And how many? 6 chlorines. Then you have silicon में you have attached chlorine. 6 fluorines. ठीक है. And germanium में आपने क्या लगाया हुआ है? Chlorine. ठीक है. तो इन सब में देखिए and look at the sizes here. ठीक है. सिर्फ साइज का फर्क है और किसी चीज का फर्क नहीं है. And tell me which of the following is least appropriate. Appropriate size क्या होगा? When you have similar sizes, तो उनके बीच में क्या हो सकता है? बॉन्डिंग हो सकती है. And then you can surround it with similar. सिमिलर तो नहीं, हम दो बोलेंगे छोटे से आप उसके साथ सराउंड कर सकते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ स्मॉल सेंट्रल एटम. अब इसमें अगर आप बड़ा बड़ा, यू कैन हैव ओनली 4. यू कैन हैव 4 बिग एटम्स, है ना. 4 से ज्यादा इतने छोटे इसमें आ ही नहीं सकता. इफ यू हैव अ वेरी स्मॉल सेंट्रल एटम, तो उसमें 4 बड़े से ज्यादा, 5वां बड़ा नहीं आ सकता, छठा बड़ा भी नहीं आ सकता. ठीक है. यू कैन नॉट हैव सराउंडिंग एटम विच इज वेरी लार्जर देन साइज. उसके लिहाज से ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट size of central atom should not be smaller. क्या हम तो बोलेंगे, मतलब अगर should not be, rather I should say like this. Number of surrounding atom that central atom can accommodate. Number of surrounding atom that central atom can accommodate depends on the size of atom. ठीक है. Now let us look at the period. So you have कैसी, सुनाओ, प्रभु. So you have SN. SN is in second period, third period, fourth period, fifth and sixth period. ठीक है. तो SN आपके पास fifth period में. सराउंडिंग एटम कौन सा आपका? ऑक्सीजन को अगर हम मान लें, ऑक्सीजन इज इन सेकंड पीरियड. सिलिकॉन आपके पास कौन सा है? थर्ड पीरियड. एंड उसके बाद आपके पास सराउंडिंग भी कौन सा? थर्ड पीरियड का. सिलिकॉन इज अगेन थर्ड पीरियड एंड सराउंडिंग एटम इज ऑफ सेकंड पीरियड. जर्मेनियम की अगर हम बात करें, जर्मेनियम इज ऑफ फोर्थ and surrounding atom is of third period. So tell me which of the following is the least appropriate combination. Which of the following is the least appropriate combination? These are the central atoms and these are the surrounding atoms. ठीक है. Central atom बड़ा होना चाहिए, surrounding atom थोड़ा छोटा ही होना चाहिए. Tell me guys, which of the following is the least appropriate? Central atom का size बड़ा होना चाहिए surrounding atom से. अब बताइए. अब तो आसान कर दिया हमने. Tell me guys, what happened? अक्सा, फरहत, मैमुना समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? एलन. यस, मैमुना, फरहत, टेल मी, समझ में नहीं आ रहा है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए. कुछ बोल. Am I audible? First of all, tell me. Is my voice cracking or something? Yes, sir, you're audible. हाँ, तो आप लोग बताएं फिर. फरहत, मैमुना, एलन एंड अक्सा. फरहत आपको नहीं समझ में आ रहा? फरहत, आर यू देयर? फरहत इज नॉट हियर और व्हाट? ओके. अक्सा, अच्छा फरहत यू आर हियर. समझ में आया? नहीं समझ में आया? Yes, sir. Understood. तो बताइए कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, विच इज द लीस्ट अप्रोप्रिएट साइज के हिसाब से? देखिए, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वंस अगेन. ठीक है, आसान सी चीज है इसमें. यू कैन ऑल्सो हैव एग्जाम्पल्स फ्रॉम हैलोजेंस. ठीक है, सो इससे हम इसको कैसे समझा दे रहे हैं. इफ आई हैव एन एटम लाइक दिस, ठीक है, तो इसी साइज का आई हैव सराउंडिंग एटम्स.
ठीक है, नो दिस बिकेम cumbersome. लेकिन अगर हम यही चीज को क्या करते हैं, if I increase the size here, and then I added these atoms, ठीक है, so this can easily accommodate 6 atoms. But if you have atoms of same sizes, है ना, central atom और surrounding atom अगर same size का होगा तो barely you can accommodate 6 atoms. ठीक है, that is why this will be what unstable. ये देखिए कितना repulsion होगा इन दोनों के बीच में. This will be unstable and this will be stable. अब बताइए which is the correct option? Which of the following is not stable? Aksa, are you there? Yes, Aksa, tell me, are you there? No, Aksa is not here. Okay. Mamuna, what about you? Yes, Mamuna, tell me. समझ में आया नहीं समझ में आया? Yes, Mamuna. Yes, Alan. ठीक है. फरहत करेक्ट, Alan करेक्ट, वेरी गुड. Mamuna, आप बताएं. Sir, I didn't understand. Keep your mic on then. Yes, sir. ये आपको keep your mic on तो फिर ऑफ कर लिया आपने. Yes, Mamuna. Yes, sir. जी, ये आपको समझ में आया, ये जो हमें पता है आपको साइजेस के बारे में, when it is unstable Yeah. and stable, ये समझ में आ गया आपको. ठीक है, अब हम लोग को we have to apply this now. Okay, now you will see the central atom. Here we have tin, silicon and germanium. Correct? Yes. And according to the size, how is the size mattering? Size होगा पीरियड के हिसाब से. If I have first period में hydrogen and helium, these are small. Second period में carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and all of these are what? Small atoms. ठीक है, I have written the period number here. Correct? कोई दिक्कत? Yes. No problem, right? Now, these are the period numbers of central atom. And here I have written the surrounding atom का period number. Understood? Yes, sir. Now, tell me this one. Fifth वाला ज्यादा बड़ा होगा या second period का atom ज्यादा बड़ा होगा? Second. I'm asking again, which will be larger in size? Fifth Okay. period or second period? Sorry? Fifth one. Fifth one will be larger. तो आराम से ये हो सकता है. It will be stable. सही है? Yes. बताइए, which will be larger? Third period or third period? They will be same. Yeah. So this will be less stable या unstable इसको कह सकते हैं, है ना? ये देखिए आप ना, ये हमने दिखाया था ना, सेम साइज. Yes. थर्ड पीरियड के तो सारे सेम होगा ना. इन अ पीरियड ऐसे भी क्या होता है, द साइज डिक्रीजेस बट उतना डिक्रीज नहीं करता साइज, राइट? सो ऑलमोस्ट एक पीरियड के अंदर साइज सेम रहता है. ना हियर यू टेल मी विच इज लार्जर, सेंट्रल एटम या सराउंडिंग एटम, कौन बड़ा है? Central art. तो इट विल बी स्टेबल. ठीक है, डी वाले केस में कौन बड़ा है? Central art. अगेन दिस विल बी स्टेबल. Which is the only option that is not correct? B. Got it? Yes, sir. अक्सा, आपको समझ में आया? अक्सा तो है ही नहीं क्लास में. हाँ, तो आपको जब पहले हम पूछ रहे थे, पहले आप आंसर देखिए. Until unless you are going to discuss, आपको कैसे समझ में आएगा? फिर भूल जाएंगे आप चीजों को. Most of the time I scold students जब वो माइक ऑन नहीं करते, बातचीत नहीं करते. चलिए, try this one. Thermal stability of hydrides.
आसानी से कौन सा बॉन्ड टूट जाएगा बताइए आप? Which bond can be broken easily? Yes, Alan, correct. Very good. How are you going to look at the bond strength? Here you have hydrogen, that is the first period element, and oxygen आपके पास है second period, then you have third period element, then you have fourth period element, then you have fifth period element, and then you have sixth period element, right? So as you are going from, इसको यहाँ पे लिख देते हैं. Yes, Farhad, correct. Okay, so this is second period, third period, fourth period, fifth period, and sixth period. As we go down the group, what is going to happen? The size is going to increase, and the overlapping between hydrogen and the group 16 element will not be effective because of difference in the size of the p orbitals. Polonium का जो p orbital होगा, it will be very large, and the overlapping between polonium and hydrogen will be very bad, and that is why what is going to happen? Polonium and hydrogen can be easily broken. उसमें अगर आप हीट कीजिएगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या, आप हीट कीजिए बॉन्ड टूट जाए. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, क्या लिख लेंगे इसमें पॉइंट आप? थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. थर्मल स्टेबिलिटी of hydrides decreases down the group due to what? Due to decrease in bond dissociation energy. Write this down. Okay. Identify the incorrect statement related to PCl5. ठीक है, PCl5 के स्ट्रक्चर के बारे में है. You have seen this in chemical bonding. All of these are 120 degrees and these are what? 180 and 180 degrees. Yeah. इन तीनों को क्या बोलते हैं? These are equatorial and these one are what? These are axial bonds. ठीक है. They are asking incorrect statement. Okay. Axial PCl bonds are longer than equatorial bond. This is true. ठीक है. These are what? Longer. PCl5 is non-reactive. नहीं, reactive तो होता है. PCl5 को अगर आप हीट कीजिएगा ना, then it will easily break down to PCl3 and Cl2. कैसे ब्रेक डाउन करता है? यही जो लंबे बॉन्ड्स है ना, they easily break off and forming Cl2 और ये PCl3 बच जाता है बीच वाला. The 3 equatorial PCl bond make an angle of 120 degree. This is also true. 2 axial PCl bond make 180 degree with each other. This is also true. है ना? तो the correct option is B because this is the wrong statement. This is a false statement. चलिए, try this. कुछ तो आपको पता होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक यू शुड नो व्हाट इज हेबर्स प्रोसेस, कैसे प्रोड्यूस होता है. आई मीन हेबर प्रोसेस से क्या प्रोड्यूस होता है. दिस इज क्वाइट फेमस एंड इवन आई थिंक कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपको पता होना चाहिए. हेबर तो पता होना चाहिए कम से कम. हेबर पता होने से पता चल जाएगा. बी में 4324. Saf, yeah, I think that is correct. Yes, Fahad, correct, very good. है ना? अगर हेबर इज अमोनिया, N2 plus H2 gives ammonia. This is Haber's process. इसमें हाँ, basically there are some conditions there. Haber process में होता है, but it gives you what? Ammonia. ठीक है, तो B का 2 कहाँ पे? This is B4, B3, B2 and B4. So C is the correct option. सिर्फ यहीं पे B2 है. Okay. Contact process is for sulfuric acid. Pure nitrogen can be formed from sodium or barium azide. And Dakin process किसके लिए होता है? क्लोरीन के लिए. चलिए फिर से बताइए. Which of the following statement is unable to form MF6 3 minus?
साइज का लोचा है फिर से, ठीक है। क्लोरीन इज सेकेंड पीरियड। पता है आप लोगों को हाउ टू रिमेम्बर दिस? बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। दिस इज सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स्थ पीरियड। अब यहाँ पे देखिए गैलियम में कहाँ पे है? इट इज फोर्थ पीरियड, एल्यूमिनियम इज थर्ड पीरियड एंड बोरॉन इज सेकेंड पीरियड एंड इंडियम इज फिफ्थ पीरियड। 4 का 2 के साथ, 3 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ एंड 2 का 5 का 2 के साथ सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा इसमें बताइए? विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट अनस्टेबल हियर? समझ में आया? ये जल्दी जल्दी चलेगा क्या? हम आप लोग समझ में आया ना? व्हाट आर दीस 4 एंड दीस 2? यस और नो? प्लीज टेल मी। मैमूना, फरहत, अक्सा, दोज आंसर्ड लेट। जी मैमूना समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ जी कीजिए, फिर जल्दी कीजिए इसमें, बताइए विच इज द मोस्ट अनस्टेबल हियर? आई थिंक यस, सैफ एंड एलन करेक्ट, वेरी गुड। अरे व्हाट हैपेंड गाइस? आंसर कीजिए। मैमूना एंड फरहत वेटिंग फॉर यू। यस मैमूना करेक्ट, वेरी गुड। फरहत, अक्सा, अक्सा अगर आपको लास्ट वाला समझ में आया तो अब आप आंसर करेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आया। फरहत करेक्ट, वेरी गुड। अक्सा वेटिंग फॉर यू, बाकी सबने आंसर कर दिया है। अक्सा अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया प्लीज टर्न योर माइक ऑन एंड लेट मी नो। अब बोलेंगे ही नहीं, आंसर भी नहीं करेंगे बच्चे, ऐसे ही होता है बिल्कुल, है ना? यस वेरी गुड अक्सा, करेक्ट। डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस, लेकिन वी हैव डन 2018 और बीच में आपको 20 मतलब ऑलमोस्ट 5 सेट हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब उसके पुराने में जाइएगा तो देयर विल बी things which are not very much going to be repeated, ठीक है। So if you want I can give you this paper also, just please message me on WhatsApp, ठीक है। message me on WhatsApp and then you can do 2018 के बाद वाले, ठीक है। which of the following statement is not true for halogens? So ये सारी चीजें आप लोग किससे कर पाइएगा? after you read the notes, you must have got the notes, ठीक है। उनको पढ़ के फिर आप बाकी आप जहाँ पे ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब like these are again simple question. It is because of the inability of NS2 electrons of the valence shell to participate in the bonding that SN2 is oxidizing with Pb+4 is reducing. इन सब के बारे में आपको बताना which of the following is true, ठीक है। ये वाला बताइए तो जरा, दिस इज एक्चुअली इजी, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है, नॉट पेयर इफेक्ट के बारे में। यहाँ पे आई एम मेकिंग दिस, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? कैसी गीत सुनाओ प्रभु, या कैसी गीत सुनाओ प्रभु। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वी रेड ना, Pb+4 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? टेल मी गाइस, Pb+4 इज ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? भूल गए सारे। Pb+4 इज गोइंग टू बी, अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, आई थिंक आप लोग के दिमाग में नहीं आ रहा है। ऑल ऑफ यू नो इनर्ट पेयर इफेक्ट, yes or no please tell me? सैफ, मैमूना, फरहत, Yes, आलिम, sir. इनर्ट पेयर इफेक्ट पता है आपको, है ना? एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट कैसे इंक्रीज करता है? डाउन द ग्रुप inert pair effect increases and the reluctance of s subshell increases, and also down the group what happens? Lower oxidation state is more stable, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, lower oxidation state is more stable. If I have this group, कैसी गीत सुनाओ प्रभु,
Now this is group number what? This is group number 14. And in this group number 14, we will have two variable oxidation state, है ना? एक हमारे पास क्या हो सकता है? +4 and +2. तो कार्बन में भी होगा क्या? You will have +2 and you will have +4, +2, +4, +2, +4, +2 and +4, +2 and +4. ठीक है? Now, as we go down the group, then what happens? Lower oxidation state is more stable. That means Pb +2 is more stable than Pb +4. ये आपको समझ में आया? Yes, sir. According to this, ठीक है. यानी कि if I have Pb +4, I can easily convert this to Pb +2. This will be spontaneous because Pb +2 is more stable. ये समझ में आया सबको? Yes or no? Please tell me. All of you understood this? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. समझ में आया? ठीक है. Now, next thing what I can say is that Pb +4 is getting what? It is easily getting reduced. ये क्या हो रहा है खुद ब खुद? This is getting reduced. इससे क्या हो रहा है? Reduction. That means Pb +4 is a oxidizing agent. Right? Yes or no? Please tell me. All of you know this now? Yes, sir. The species which itself get reduced is an oxidizing agent. ठीक है? And आपको कंपेयर किससे करना है? Sn में. Sn is what? It is above Pb. तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें +4 ज्यादा स्टेबल है. That is why I can Sn +2 से Sn +4 जाना. It will be what? It will be easier. Now what is happening? ये oxidize हो रहा है. ये oxidize हो रहा है. That means it is going to reduce it. Understood? Yes or no? Please tell me. ये किसके साथ काम करेगा? This will act as reducing agent. So I will say Sn +2 is reducing agent. Pb +4 is oxidizing agent. है ना? So which option is correct? B is correct ना? Oxidizing Pb. Sn +2